पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साधभूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतस्मै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एकस्मन्त्रस्तस्नमानि यानि कर्माणि अपि तस्य देवस्य सेवम्। Hare Krishna devotees. So thank you all for joining this morning. So we were on chapter number 11 and Vishwaroop is going on, and then the Kala Roop of the Lord started. So all those things are going to happen. So last time I could not show anything because my laptop was not working. So we'll just see the Kala Roop and Vishwaroop photo a little bit so that we get some idea ki what Krishna is showing now. Okay. So Prabhupada and his disciples, they have made very amazing pictures which are windows to the spiritual world. Okay, so you're able to see my screen, close? Yes, Prabhuji. Okay. So here you see on the left hand side is a Vishwaroop. So Arjuna saw first the Vishwaroop, that is the opulence part of the Lord with all demigods and everything in the body of the Lord. So this is representative because they will not be able to make all the descriptions which are given of Vishwaroop in one photo, because the description says that on all parts of body of Krishna they were seeing different types of universes also, not just universes, different types of universes. He was seeing different colors, he was seeing different demigods, he was seeing. So that is Vishwaroop, which Arjuna was seeing. It's a revelation given by Krishna to Arjuna. So interestingly, when Vishwaroop came, Arjuna is speaking the name of Lord, that is Vishwaroop. I am seeing the Vishwaroop. And he is not fearful on when seeing the Vishwaroop. But when it came to Kalaroop, starting from the verse 20, when the Kalaroop came, so you can see on the side the Kalaroop, some descriptions are given of Kalaroop, where Krishna is devouring everything. So this was the form which Arjuna had never seen. And he was surprised to see this form of Krishna, the Kala Roop of the Lord. And therefore, he asked the two famous questions, which we saw in the last. He asked two questions. What were the two questions he asked to the Lord? What were the two questions he asked? Anyone remembers what are the two questions he asked? Yes, Prabhuji. Arjun says, "Who are you, and what is the purpose of this form?" Correct. So he asked these two questions that, oh Krishna, who are you? What is this? Who are you? And what is your mission? So because Kal Roop was never known to Arjuna, Vishwaroop was known to Arjuna. So how it was known? Because the glimpses of Vishwaroop was already shown to Arjuna, was already shown by Krishna in two places before. So one place was when Mother Yashoda told that Krishna, you should open your mouth. I will see whether you have eaten dirt or not. At that time, Krishna showed a Vishwaroop. Inside the mouth, he only showed the whole universe.
So that was a glimpse of Vishwarup. Again, when when Krishna went to Duryodhana for peace negotiation, that time also Krishna showed a form of Vishwarup. Not exactly this one, but a form of Vishwarup. So Arjuna was aware of this, that there's a Vishwarup of Krishna. So, but this Kala Roop was not known to Arjuna. Kala Roop was never known to Arjuna. So, therefore, he is asking this two question to Krishna, that, oh Krishna, what is this? Who are you? And what is the mission? So, from there, we are going to start. So, we'll be covering today 3-4 shlokas because this is spoken by the Krishna when he's showing his Kala Roop. So, this is very, very important verses. So, let's go to the notes. Okay. So devotees are able to see these notes? Yes, Prabhuji. Okay. So let's see. So Krishna is answering the above two questions from verse number 32 to 34 and telling that I am that Kal Rupa, time I am become my instrument. That is the essence of this shlokas. So very important shlokas for all of us. Verse number 32. Shri Bhagavan Vacha Kalosmi Lokshaya Krit Pravardho Lokan Samahartumiha Pravatta Kritepi Tvam Na Bhavishanti Sarve ये वस्थिता प्रत्यने नीषु योद्धा. Yes, read the translation. The Supreme The Personality Supreme The Supreme Personality of Godhead said, Time I am, the greatest destroyer of the worlds, and I have come here to destroy all people. With the exception of you, the Pandavas, all the soldiers here on both sides will be slain. Very fearful statement of Krishna. Krishna says, okay, let's go to the verse. Now we'll go to the purport. Kalosmi, I am the time. Lokashaya krit pravardho. I am great. I am the super powerful. So there are two meanings of pravidho given by our acharyas. One is very, very powerful, and second, it is spreading everywhere. This power is a power which is there everywhere. You cannot stop this power of Kala. You may break a watch. I will break the watch. But you cannot stop the power of time. And you may go to Himalayas, you may go to Antarctica, Arctic, you may get to Swarga, Jana, Loka, Tapa, wherever you go. Kalosmi, Lok, Shaya, Krit, Pravardho, everywhere. I am the great powerful. Nobody is more powerful than time in this world. And what is my mission? So that is the introduction of Krishna. Introduction of Krishna is that I am time. And then what is my mission? Lokan samahratum eva pravatta. To destroy the all people. To destroy all people. That is my mission. To destroy everything. So this is another aspect of God. So there are two aspects. Paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkritam. Dharma sanstapna te sambhavami yoga yoga. So Lord means he is complete in all aspect. So one of the aspect is Karuna Sindhu. Hey Krishna, Karuna Sindhu is an ocean of mercy. And second is Kalosmi. I destroy everything. So generally in other faith, they highlight this part of the Lord very much. That he is the one who will destroy. He will throw thunderbolts on you if you don't follow him. That's Kalosmi aspect of the Lord. So that's one aspect. Fear platform. And then some people have the desire platform. But this is a mission of the Lord to destroy everything. So why does he destroy? Lord destroys the temporary to make way for the eternal. So Lord is making arrangements to destroy everything to make us realize that this is our temporary home. This is a temporary home. Let us go to a permanent home. This is not the place where you stay. This is a not place for gentlemen. So therefore, God destroys the temporary to make the way for eternal. Krite pitvam na bhavishyanti sarve. Krite here it means two meaning. There are two meanings to krite. First meaning krite is except for you Pandavas, I will destroy everyone. Except for you Pandavas, I will destroy everyone. So at the end of Mahabharat Yuddha, how many people survived Mahabharat war? Any count? Anyone knows? How many people survived? Total. Total, how many survived? Any idea? Any count?
7, Prabhuji, 7. 7? No, more than 7. There were more than 7. So there were 5 Pandavas who survived. Krishna is always there. So 6. Then Sataki from Arjuna's party, Sataki was surviving. So 7. 7 from Pandava's party were surviving. From Kaurava's party, how many survived? 3. Ashwathama, Kripacharya, and one more. And Kritavarma. So they survived. 3 of them survived. And one half brother of Kaurava, 101. 101. There was one brother of Kaurava's, Duryodhana's last brother. He shifted to Pandava's army before the battle. So he was a half brother. He was known as a half brother because Dhritarashtra got that son from a maid servant. So therefore he was considered the half son of Kauravas, half brother of Kauravas. So he also survived. So he was the one who gave चिता को अग्नि दिखाने के लिए वही बचे थे. तो उन्होंने दिखाया था सब. So बस इतने ही बचे थे. कृते त्वं न भविष्यन्ति सर्वे. Except for you, I will destroy everyone. The second meaning of krite is that even if you do not fight, without you also I will destroy everyone. Krite pi, except you, without you also. Without you, even if you don't like to fight, still I will destroy everyone. And which party? Your party and that party also. Both party. I will destroy. Okay. So this is Srila Vishwanath Chakravarti Thakur's committee. Even without you, all these warriors will be destroyed. Okay, Srila Prabhupada's purport. Although Arjuna knew that Krishna was his friend and the Supreme Personality of Godhead, he was puzzled by the various forms exhibited by Krishna. Therefore, he asked further about the actual mission of this devastating form. So this is Kala Roop which Krishna showed, and it was very devastating. It is in the Vedas the Supreme Truth destroys everything, even the Brahmanas. So very, very important shloka in Kantha Upanishad is given. Yasya Brahma cha Shatram cha Ubhe Bhavata Odana Mrityur Pasyopachenanam Ka Itha Veda Yatra Saha. Eventually, the Brahmanas and Kshatriyas, everyone else are devoured like a meal by the Supreme Lord. और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि जैसे सॉस डाल के खाते हैं वैसे करके लॉर्ड खा लेते हैं. So this form of the Supreme Lord is all devouring giant, and here Krishna presents himself in that form of all devouring time, except for the few Pandavas present. Except for the few Pandavas, everyone who was present on the battlefield would be devoured by him. Arjuna was not in favor of fight, and he thought it was better not to fight. Then there would be no frustration. In reply, the Lord is saying that even if he did not fight, every one of them would be destroyed, for that was his plan. So that was a plan of Krishna. If Arjuna stopped fighting, they would die in another way. Death could not be checked, even if he did not fight. In fact, they are already dead. Time is destruction, and all manifestation are to be vanquished by the desire of the Supreme Lord. That is the law of nature. So last 2 lines, Prabhupada is writing a very, very important statement, that this time factor is a factor of destruction. And whatever is there, all sense gratification is destroyed. I wrote there. Okay, so let us contemplate a little bit on this verse. Very, very important verse. So Kalosmi, by the power of time. So sun is a symbol of time. In previous time, we used to have the sundial by which people used to calculate the time. So we know this verse in Srimad Bhagavatam where it is told, Ayur Harati Vapumsan Udyan Astan Chayaneshu. So with the rising of the sun and with setting of the sun robs the age of people just by rising and setting of the sun. That's the power of time. One day lost means we are getting old. So we say this example in our device also, that if somebody asks you, how old are you? I say we are 30 years old. So yes, we are getting old. We are moving closer to death. So people celebrate birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. But it's a day of making not just happiness, but it's a day of sadness also. Arey, I am getting closer to Krishna. Closer to death. Sorry. Krishna, so we are going to closer to Krishna. So that shloka says, for the materialistic, they are moving closer to death. For a devotee, they are moving closer to Krishna. So understanding that I am so much controlled by time, one has to become sober and cool-minded. Something in life takes time. So you have to leave some things of your life to time factor roles. You cannot control everything.
I remember one time I went to his Grace Aisham Prabhu with a lot of questions. So they were around 25 to 30 questions. And I went there with a list of questions written on a paper. So he saw the questions and then he told, Alok Prabhu, listen, some things in life take time. Have patience. So I remember that statement. So not everything is under our control. We want to make somebody a pure devotee tonight. No, it's not possible. We have to give time to him. He will grow on his own. And there are some issues in our life. It will take some time to solve. One should not be disturbed. So time destroys everything, even the good, even the bad, everything. Nothing is in my much control. So situations which are coming in my life, they are not under my control. Only my response is in my control. That's it. So what is our response? It can be either a frustrated response, why it is happening with me, or it can be a devotional response that let me take shelter of Lord now. So therefore, people, there's a quote which Prabhupada used to say always, as sure as death. This is the ultimate reality. This is the ultimate reality Prabhupada used to say. So there are two things which can happen in death. Everything is taken away at the time of death, or everything is given back. So these two things can happen. So what is taken away? So people fear death. Why they fear death? Because they know that at the time of death, whatever I have earned, whatever I have accumulated throughout my life will all be taken away by the force of time. It will be forcibly taken away. Prabhupada used to give example of a businessman in Kolkata, and he used to ask his doctor, "Doctor, can you give me just 1 year? 1 year, I want to finish this business." And doctor says, 1 year? I cannot give you even 5 minutes more. So everything is taken away. Therefore, people fear death. So that is one reality. But for devotees, everything is given back. They are given back their constitutional position as a servant of the Lord. They are given back their spiritual body, if they remember Krishna. They are given back the opulence of the spiritual world. So that is how devotees welcome death. That is another form of Krishna. Krishna is coming to take me back home, back to Godhead. So time and tide waits for no man. So it's not that we can have wait कि ओ यमराज थोड़ा सा मैं आईएएस ऑफिसर हूँ इसलिए थोड़ा वेट करो यमराज बोलेंगे मेरे लिए कुछ नहीं हो तुम यमदूतास आएंगे गले में लगाएंगे लेके जाएंगे so nobody can stop it. So the biggest question is, are we doing preparation for it, the final exam of life? And this exam is like a snap test. मुझे याद है when I was studying in my school, there used to be a snap test. वो कभी भी हो जाता था. मुझे याद है हमारे एक टीचर हुआ करते थे, अनिल पांडे नाम था उनका, फिजिक्स पढ़ाते थे हमको, अनिल पांडे सर. और वो पढ़ाते पढ़ाते अचानक बोलेंगे आज मौसम बहुत अच्छा है. और ये स्टेटमेंट सुनते ही हम समझ जाते थे आज तो कुछ गड़बड़ होने वाला है. So instantly used to चलो टेस्ट लेना है, snap test. Everyone take out one page. And then he used to write 2 questions on the board and we have to solve it. So that means every day we need to be prepared, whatever he has taught, because anytime he could have given a snap test. Similarly, this is death. The Kal aspect of the Lord is like a snap test. A snap, at a snap it will come. So are we doing preparation for it? We are doing preparation for IIT, JEE. We are doing preparation for coding. We are doing preparation for IS. We are doing preparation for getting married. So many preparations we are doing. You ask any people, आप अभी क्या कर रहे हैं? हम अभी prepare कर रहे हैं. आप अभी क्या कर रहे हैं? हम prepare कर रहे हैं अभी. किसका preparation कर रहे हो भाई? Are you preparing for the final exams which will take away everything? Whatever we have done in our life, MTech, BTech, PhD, business, MBA, money which we have collected, everything will be taken away at the time of death. Are you prepared for it? And Krishna gives that formula. Antakale chamameva smaran mukta karevaram. That the formula is you have to remember me at the time of death. That preparation we have to do. And therefore devotees play a very important role in our life. Those devotees who are around us, that they may be the ones who will be at the time of death with us, making us remind of Krishna. Therefore, devotees association is very, very important. And having a good friendship, कि आपके एक कॉल करने पे वो आपके पास आ जाएं. So you remember His Holiness Radhanath Swami Maharaj cancelled all his program for His Holiness Bhakti Tirth Swami Maharaj when he was about to leave the body. And Bhakti Tirth Swami Maharaj says, kindly be here at my last time. And we did not know that how long he will be there in that bed.
But His Holiness Radha Swami Maharaj was there for 2-3 months continuously with him to make him be with him. Similarly, in our preparation of life also, we need to have this, our self-preparation of remembering Krishna and preparation of a relationship. The devotees should be aware around us to make us remind of Krishna. Then everything will be given back to us. So everything is going to change by the power of time. Nothing is going to remain stagnant. So there's a famous quote which says, the only constant thing in the material world is change. Every moment is changing. So in the scale of eternity, time between birth and death is insignificant. If you see from the timeline of eternity, this life which we have is very, very short, very, very short. So what we do with this small period, that is important. Are we using it for the preparation? Or by we are thinking, चलता है, अभी तो time है, चलता है, time है. नहीं, ये चलता है एटीट्यूड नहीं चलता है. ठीक है, ये चलता है एटीट्यूड डिवोशन लाइफ में नहीं चलता है. Any moment the strike of death may come. And therefore a Vedic civilization was so nice that 50 होते ही वो बोलते थे 51, 52, 53, 1 में जाओ, प्रिपरेशन स्टार्ट करो, 1 वानप्रस्थ लो. कब तक घर गृहस्थी में जखे रहोगे? वानप्रस्थ लो और जाओ. Go for the preparation. So that's how Lord is telling us to prepare for us. So you see our very dear friend Deepak Kabra Prabhu now, Damodar Vinod Prabhu, he is in a very critical condition. So we all are praying for him. I remember last year meeting his wife, he had a small daughter now. So very healthy, very cheerful, and very blissful in devotional life. But suddenly just 15 days before, he got some problem with lungs. And now doctors telling there is no cure for that disease which he got. So we all are praying for him. We request all devotees to pray for his health so that if he can recover. Doctors have lost all the hope. He may leave his body. His Holiness Radhanath Maharaj called him on phone and gave him initiation on the phone only. Damodar Vinod Prabhu. So very critical condition. He is still in hospital. So we request all devotees to pray for Damodar Vinod Prabhu. If Krishna willing, so he may serve here, or then he will go in the spiritual world and serve Krishna there. So 10 days before we talked with him. I remember talking with him 10-15 days before, inviting him for our STW program. And he was very, very happy, very, very normal, blissful. He was telling about how Bhakti Shastri he is also doing from Chaitanya Charan Prabhu. So very blissful. But suddenly this moment has come. So we don't know when this moment is going to come in our life. So therefore, every day is a preparation, every day. So that's what Krishna is telling over here. So we need to understand Krishna's transcendental position as the Supreme Lord and his disposition as a Kalaru. Disposition means he's a controller of everything. Everything is under control. So we should not worry about so much about the things. We can do the needful, but we should know that Krishna is in control of my life. If I surrender to Krishna, Krishna will take care of my life. Shraddha Shabde Vishwase Kahe Sudra Nishchay Krishna Bhakti Kaile Sarva Karma Krita Hoy. If we surrender to Krishna, Krishna will take care of it. That is his disposition. He is not just God. So generally we say Krishna is the Supreme Personality of Godhead. But हमारा mind जाता नहीं है कि इसका मतलब क्या है. अगर कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड हैं, इसका मतलब ही इज कंट्रोलिंग माय लाइफ एज वेल. So we have a knowledge of Krishna's transcendental position, but we should also have a knowledge of his transcendental disposition. That how does he control? His plans are better than mine plan. So therefore we have to cooperate with his plan. So man proposes and God disposes. Supreme Personality of Godhead has a plan for everyone. So nothing wrong in making plan. We need to do planning. Yes, we need to do our part. But ultimately, we have to dovetail our plans to the plans of Krishna. Whatever Krishna's plan will be there, that will execute it. So ungrudgingly, we have to accept what is happening as a mercy of Lord. So Prabhupada, in the second chapter, I think he gives, in the second chapter, when Sthita Pragya section is going on in the second chapter. So Srila Prabhupada writes the disposition of a devotee. Disposition of a devotee is that when miseries comes in his life, he says, this is all mercy of Lord. He is giving me less than what I
deserve. Tatte nukampasu sumikshmano bhunjana vivatmakritam vipakam. So that's the feeling that I should deserve more miseries because of my sinful activities, but Krishna is giving me very less. And when the happiness comes in his life, he says, this is all by the mercy of Krishna. Krishna is empowering me. He is giving me intelligence. He is giving me strength. Therefore, I am able to do what I am able to do. So he gives credit to Krishna. That's the disposition of a devotee. So when the time comes, no more 5 minutes, Prabhupada's story. So have you done the preparation? So therefore, Prabhupada used to say, finish your business in one lifetime. Don't wait. So this is time is destruction. Kala means change. Always is change. There's a change in the material world. You see, अभी हम सोचते हैं मैं 2011 में जब था कॉलेज आया था, मुझे याद है मेरे को कीपैड फोन मिला था, वही मेरे लिए एकदम एक्सटेसी वाला पीरियड था कि कीपैड फोन मिल गया है मेरे को हैं। और अभी जस्ट 15 साल में ऐसा स्टेटस आ गया है कि लोग मोबाइल छोड़ नहीं पा रहे हैं। दे कैन लीव देयर वाइफ बट नॉट मोबाइल। मोबाइल से दूर नहीं कर सकते। So that's a change, lots of change. According to Krishna's plan, everything is working. We may not understand it 100%. So things are working by his plan, but we may not understand. Why this is happening to me? Rest assured, everything is happening by the will of Krishna. In spite of one's best effort, when things happen against our plan, one should accept it ungrudgingly. Accept it as Krishna's plan. So that is what is Kala Rupa. Krishna in the form of a time is controlling everything, destroying everything, making the way for eternity. That is Krishna's supreme plan for all of us. Okay, so what does Krishna expect from all of us is the next verse. So Krishna told, I am time and I am in the power of destruction, destroying everything. So what do Krishna expect from us? Verse number 33. Tasman tvam mutishtal yasho labhasva jitva shatrum bhukshva rajyam samriddham mayevate nihatam purvameva nimittamatram bhavisabhyasachim. Yes, read the translation. Therefore, get up, prepare to fight and win glory. Conquer your enemies and enjoy a flourished kingdom. They are already put to death by my arrangement, and you, O Sabyasachi, can be but an instrument in the fight. Very important shloka for all of us. Tatsmat, therefore. So after showing that the whole Vishwarup, now interesting thing is there, here the word is written Shri Bhagwan Vacha in the previous verse, not Shri Vishwarup Vacha or Kalarup Vacha. So it's Krishna who is speaking directly to Arjuna. So this is my form, which I showed you. Tasmat, therefore, you saw everything. What is going to happen? You saw the result of the war and how I am controlling everything. Tasmat, tvam uttishta, get up. So you know Krishna was depressed and he has left his Kandivo and Yasho Labhasya, win the glory. So that is the nature of Krishna as a Bhakta Vatsal, that he wants to give credit to his devotees. Yasho Labhaswa. I don't, although I am doing everything, but you will get the credit of being the greatest warrior who destroyed everyone. Yasho Labhaswa. Jitva Shatrum, you will win over your enemies. Bhukshva Rajyam Samriddham. Enjoy this kingdom. तो बोले क्या बात कर रहे हैं, कृष्णा बोल रहे हैं एंजॉय करो, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए बोल रहे हैं. या सो रियल एंजॉयमेंट इज इन सर्विस ऑफ कृष्णा. सो विद इन सर्विस इज एंजॉयमेंट व्हेन यू सर्व. जैसे आज फीस्ट है हमारे यहाँ, तो हम लोग उसको बोलते हैं प्रसाद सेवा. हम क्या कर रहे हैं? प्रसाद सेवा. लेकिन आज क्या है? फीस्ट है. तो सेवा में आज पता नहीं स्वीट कौन सा है, लेकिन कोई तो स्वीट होगा आज. तो प्रसाद में एंजॉयमेंट, that is allowed. That is allowed. So similarly हम बोलते हैं हम बच्चों को यात्रा पे लेके जा रहे हैं. हरिद्वार यात्रा है IIT BHU और HBTU स्टूडेंट्स की अभी, तो यात्रा में लेके जा रहे हैं उनके स्पिरिचुअल नरिशमेंट के लिए. हाँ प्रभु जी आपको भी जाना था? हाँ हाँ मेरे को भी जाना था. हरिद्वार थोड़ा घूम लेते हैं, थोड़ा स्नान कर लेते हैं. So within service is enjoyment. Within service. So that Krishna is telling you, rule this kingdom and enjoy as a service. As a service you enjoy. So real enjoyment, this is real enjoyment. What enjoyment we have in the material world is nothing. What enjoyment we have in the spiritual world is unlimited. मुझे याद है जब मैं जॉब करता था तो हम टिफिन लेके जाते थे. तो अभी आपने में से पता नहीं कितनों को एक्सपीरियंस होगा, लेकिन हम ऑफिस जाते हैं तो टिफिन लेके जाते थे. तो हमारे टिफिन में तो 5-6 खाने होते हैं.
है राइस दाल सब्जी चपाती एक स्वीट सब बढ़िया से पैक करके अच्छे से लेके जाते थे। वॉइस से जाते थे तो वॉइस से तो गरम गरम एकदम बन के जाता था हमारा। और बाकी लोग आते थे हैं वहां पर तो वो लेके आते थे, एक सैंडविच लेके आए हैं। एक सैंडविच होता था। और कभी कभी वो भी नहीं होता था तो कैंटीन से कुछ मंगाते थे। तो बोलते सर सर आपके घर में आपकी मदर आपको इतना दे देती है क्या? आप मैरिड है क्या? आप मैरिड है क्या? आपकी वाइफ वाइफ मैं कहा वाइफ कभी नहीं देगी। इतना बनाएगी क्या सुबह सुबह? तो मैं बोला नहीं नहीं हमारे भक्त लोग हैं, वॉइस सेंटर में हम रहते हैं वहाँ वहां पर। अच्छा सुबह सुबह इतना बन जाता है? आप पूरा राइस दाल सब्जी चपाती पूरा अच्छे से लेके आते हैं। बोला हाँ हाँ And आप भी लीजिए थोड़ा प्रसाद दीजिए थोड़ा सा। और स्वीट। तो अगली अगली बार जैसे मैं सुबह सुबह आता तो पहला क्वेश्चन यही पूछते थे, आज प्रसाद में क्या है आपके? आज आपके टिफिन बॉक्स में क्या है? मैं कहा अरे अभी तो क्लास चालू ही नहीं हुआ हमारा जॉब भी। सुबह सुबह आके पहला क्वेश्चन। So devotees even enjoy in that also. Devotees enjoy in that also. So in service also we enjoy. Lord, that is eternal enjoyment of a devotee. Okay. So Krishna is telling you can enjoy in my service. Maeva nihata purvameva, because I have already killed them. What is the use of killing the dead who they are already killed? So what you have to become? Nimitta matram bhavya savya sachim. You have to just become my instrument. सो somebody में से इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए बोल रहे हैं, मेरा कोई वैल्यू नहीं है क्या? सेल्फ एस्टीम नहीं है क्या मेरा? मॉडर्न मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में सेल्फ एस्टीम। तो भगवान बोले नहीं नहीं तुम सव्य साची हो, सव्य साची सव्य, यू आर वेरी एक्सपर्ट इन थ्रोइंग एरोज। सो ही इज इंकरेजिंग ऑल्सो। सव्य साची मीन्स वन हु कैन शूट एरोज बाय बोथ हैंड्स, फ्रॉम राइट हैंड फ्रॉम लेफ्ट हैंड ही कैन शूट एरोज। So therefore he is known as Savya Sachi, very expert. So Krishna is giving him assurance and Krishna is giving him encouragement that you fight. And he's telling that you have to fight. You don't have to be passive. ऐसा नहीं है, प्रभुपाद एक लेक्चर में बोले कि अर्जुन ने विश्व रूप देखने के बाद ये नहीं बोला अरे कृष्णा तुमने तो सब खत्म ही कर दिया है, अब मैं पीछे सोता हूँ। और प्रभुपाद बोलते वो खराटे मार के सो रहा है। खराटे मार के नहीं, ऐसा नहीं है। Arjuna is also fighting on the order of Krishna. He's fighting. He's doing his service. Okay. So now let's go to the purport. Savya Sachin refers to one who can shoot arrows very expertly in the field. Thus, Arjuna is addressed as an expert warrior capable of delivering arrows to kill his enemies. Just became an instrument, nimitta matram. This word is very significant. The whole world is moving according to the plan of the Supreme Personality of Godhead. Foolish persons who do not have sufficient knowledge think that nature is moving without a plan and all manifestations are but accidental formations. There are many so-called scientists who suggest that perhaps it was like this or maybe like this, but there is no question of perhaps or maybe. There is a specific plan being carried out in this material world. What is that plan? This cosmic manifestation is a chance for the conditioned soul to go back to Godhead, back to home. As long as they have a dominating mentality, which makes them try to lord it over the material nature, they are conditioned. But anyone who can understand the plan of the Supreme Lord and cultivate Krishna consciousness is most intelligent. The creation and the destruction of cosmic manifestation are under the superior guidance of the Lord. Thus, the battle of Kurukshetra was fought according to the plan of Lord. Arjuna was refusing to fight, but he was told that he should fight in accordance with the desire of the Supreme Lord. Then he would be happy. If one is in full Krishna consciousness and his life is devoted to Lord's transcendental service, he is perfect. So Prabhupada is telling he is perfect. One who is engaged in the service of the Lord, he is perfect. Okay, so now let's go to the verse. Some explanation. So now you see here is a very important aspect of Krishna which is mentioned over here. Krishna is telling, do not worry. He is giving assurance that I have done everything for you. You just have to become my instrument. So in the first chapter, now let us see how much you remember your Bhakti Shastri. In the first chapter, verse number 21 and 22 is very special. Why special? Verse number 21 and 22 was very special. So, how is Krishna first entering the arena of Bhagavad Gita? How is Krishna entering?
कैसे एंटर कर रहे हैं कृष्णा भगवत गीता में? फर्स्ट चैप्टर में कहाँ पर एंट्री है कृष्णा की? जी, Krishna is entering as a like chariot driver of Arjuna. हाँ, कृष्णा इज एंटरिंग एज अ चैरियट ड्राइवर। तो पहली बार जो कैमरा फोकस होता है तो है वो कृष्णा के ऊपर। जैसे महाभारत में बहुत जगह फोकस हो रहा है महाभारत अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो उसमें बहुत फोकस है, कैमरा कभी इधर है कभी उधर है, कभी इधर है, कभी धृतराष्ट्र के पास लेके जाता है कैमरा को। लेकिन पहली बार तो भगवत गीता स्टार्ट होता है, कैमरा होता है धृतराष्ट्र पे। हम्म, कैमरा धृतराष्ट्र पे होता है, फिर संजय पे आता है कैमरा, फिर दुर्योधन पे कैमरा आ जाता है, फिर अल्टीमेटली वो कृष्णा पे आता है कैमरा। एंड द वे ही एंटर्स, तो रायश्याम प्रभु बहुत अच्छा बताते हैं कि जब भी एक मूवी में हीरो की एंट्री होती है, कैसे एंट्री होती है, उसका एक पैर गिरेगा धम, वहां धूल उठेगी। पुराने मूवीज अगर आपने देखे हो तो हैं, फिर उसके साइड साइड से दिखाएंगे उसको, फिर उसके पीछे से उसका फॉर्म दिखाएंगे हैं, फिर उसके आगे से उसका गॉगल दिखाएंगे, गॉगल पहन रहा है, फिर अचानक वो एक विलन को ऐसे हाथ मार रहा है, तो ऐसे करके वो पूरा दिखाते हैं। अब हीरो का फिर जाके हीरो का पूरा फॉर्म दिखाते हैं, आ गया हीरो, ये मूवी का हीरो बनने वाला है। सो द हीरो इज शोन इन अ वेरी क्लाइमेक्स सीन, वेरी वेरी क्लाइमेक्स सीन से वो हीरो को दिखा रहे होते हैं। बट हियर यू सी कृष्णा इज शोन, ही इज द अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, एंड हीज एंट्रेंस इज शोन कैसे? ही इज अ चैरियट ड्राइवर, घोड़ा चला रहे हैं वो, हाथ में क्या पकड़े हैं, घोड़े की रस्सियां पकड़े हुए हैं, घोड़ा चला रहे हैं, ही उस घोड़े को अच्छे से लेके जा रहे हैं, बीच में लेके जा रहे हैं। और अर्जुन क्या बोल रहे हैं, अच्युत वर्ड से इंट्रोड्यूस करते हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में आप स्थापित करिए। तो वो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं अपने डिवोटी का एज अ सर्वेंट। सो लॉर्ड इज शोइंग हिज फॉर्म, सुप्रीम फॉर्म ऑफ बीइंग अ भक्त वत्सल। So beside his Kala Rupa, Vishwa Roop, the supreme form of Lord is Bhakta Vassalta of the Lord. That's how he shows that I'm entering the arena of Bhagavad Gita and being the Bhakta Vassal of my devotee, the love for my devotee. So, so here also Krishna is showing that. So you have seen the Kal Roop. Be sure I have done everything for you, my devotee. You have to just follow my instructions. You have to just become my instrument, and everything will be done. So we see there in 11th canto of Srimad Bhagavatam, Udhav says about that how Krishna is a supreme master. There are so many masters in this world, but Krishna is a supreme master. He's a perfect master. So there are 5 qualities of a supreme master. He talks about there 5 qualities. So the first quality which he mentioned is anavadyam. Anavadyam. Anavadyam means he is a faultless dude. He is a master without any fault. सो आप देखो इस मटेरियल वर्ल्ड के मास्टर और कृष्णा में थोड़ा कंपेयर करो, तो मटेरियल वर्ल्ड में आप अपने बॉस से मिलते हो, प्रोफेसर से मिलते हो, तो उनके मुंह बोलते हैं हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, और पीछे बोलते हैं आ गया, कम्स आ गया। लोग बॉस के पीछे कितनी चुगली करते हैं। हमारे प्रतीक प्रभु हैं, अभी कोचिंग में जॉब करते हैं, तो बोल रहे हैं उनके स्टाफ रूम में एक ही डिस्कशन चलता रहता है, कैसे जो उनका जो एचओडी है, उनका जो ओनर है, इतना एक नंबर खड़ूस है, पैसा नहीं देता है, ये नहीं करता है। और फिर बहुत अचानक घुसता है, हेलो सर, हाँ सर कैसे चल रहा है सर, बहुत अच्छा चल रहा है सर, हाँ हाँ सर बहुत अच्छी जॉब है सर, बहुत अच्छा बात है। लेकिन ऑन द बैक में क्या चल रहा है, सब वो चल रहा है। सो बिकॉज दे सी सो मेनी फॉल्ट्स, सो ही नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन बी फॉल्टलेस। कभी कभी एक लड़का लड़की से फोन पे बात करता है, 3 घंटे बात करता रहता है, 4 घंटे 5 घंटे बात करता रहता है, उसको लगता है तेरे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा मैं, ऐसा मतलब लव होता है। उसके बाद मैरिज होता है, उसके बाद मैरिज होता है, अब क्लोज आते हैं तो अब फॉल्ट्स नजर आते हैं, तो बोलता है तेरे को मैं तोड़ दूंगा या तेरे से डाइवोर्स ले लूंगा। चांद सितारे बाद में तोड़ूंगा, पहले तेरे को तोड़ना है। इस रिश्ते को तोड़ना है। So now, because he is able to see faults now, we've been closer now. But Krishna is such a personality who is anavadyam, is faultless. This is the first quality mentioned. Second is ananta. He is ananta or unlimited or beyond space and time.
तो सोचो आप अपनी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आप 1 साल से पूरी मेहनत कर रहे हैं कि मुझे प्रमोशन मिलेगा हैं, और पूरा दिखा रहे हैं उसको, अपने बॉस को कि यस हैं, हमारे निशांत थ्रू हैं, जॉब करते हैं। तो निशांत थ्रू एकदम 1 साल से जॉब कर रहे हैं और उनको लग रहा है मिलेगा मिलेगा हैं, और जॉब बॉस भी इंप्रेस हो रहा है, यस निशांत वेरी गुड, यू आर वर्किंग वेरी नाइसली। और फिर अचानक जिस दिन प्रमोशन होना था बॉस चेंज हो गया। एक नया बॉस आ गया। और उसको कुछ नहीं पता इनके बारे में। तो क्या लगेगा? तो कुछ नहीं होगा उसका। करेक्ट ना निशांत गुरु? बॉस चेंज हो जाते हैं आपके। तो लेकिन कृष्णा ऐसे नहीं है। कृष्णा इज अनंत, ही इज अनलिमिटेड, ही इज बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, ही इज नॉट गोइंग टू चेंज, ही इज नित्य। सो वॉट एवर सर्विस वी हैव डन फॉर हिम, अगर आपने 50 लाइफ टाइम पहले भी एक फूल ऑफर किया है कृष्णा को, कृष्णा को ये याद है, कृष्णा को याद है कि आपने उनके लिए किया है। हिज अनंतम। सो दिस इज सेकेंड क्वालिटी। थर्ड क्वालिटी इज ईश्वरम। ही इज ईश्वरम, सुप्रीम ईश्वरा। तो वो अनवद्यम, फॉल्टलेस हो सकता है, अनंता हो सकता है, लेकिन अगर उसके पास पावर ना हो तो क्या काम। लेकिन हियर इज टॉलिंग ईश्वरम, he has supreme power as well. He can control your life, he can control the situations of this world. Therefore he is ईश्वरम। तो ये तीसरा वर्ड वो यूज करते हैं ईश्वरम, दैट ही कैन कंट्रोल। थर्ड, फोर्थ क्वालिटी वो मेंशन करते हैं अनवद्यम, अनंतम, ईश्वरम। नेक्स्ट श्लोक का क्या था? एक मिनट, वो श्लोका का फोर्थ लाइन में भूल रहा हूँ। अनवद्यम, 11 to 8। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, याद आजा। अनवद्यम, अनंतम, ईश्वरम। और क्या क्वालिटी थी? अनवद्यम, अनवद्यम। हाँ, यस यस, ओके। ईश्वरम, हाँ, सर्वज्ञम, सर्वज्ञम, दिस इज द फोर्थ क्वालिटी विच इज मेंशन्ड एज सर्वज्ञम। सर्वज्ञम मीन्स ही इज omniscient, he knows everything, he knows everything. सो हमारी कंपनी में कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने, आपने वो प्रोजेक्ट किया, लेकिन आपका एक दोस्त आएगा, वो आपसे चुरा के उसको दिखा देगा, तो उसका हो जाएगा वो प्रोजेक्ट। जैसे प्रभात बोलते थे कि जेसी बोस ने वो रेडियो और टेलीफोन इन्वेंट किया, लेकिन नाम हो गया उसका दूसरे का, ग्राम बेल या पता नहीं कौन था, मार्कोनी। मार्कोनी का नाम हो गया, क्योंकि उसने उसको पब्लिश कर दिया। जबकि वो दोनों साथ में कर रहे थे। सो बिकॉज पीपल आर नॉट सर्वज्ञ, वी डोंट नो आपने क्या किया है क्या नहीं किया है। सो वी डोंट नो, बट कृष्णा नोज एवरीथिंग। तो अगर आपने टेम्पल हॉल में झाड़ू लगाया है भगवान के लिए, और हम सोच रहे हैं कि अरे भगवान का ऑल्टर भी बंद है, यस दिस इज अ श्लोका, तस्मात् भवन्तम् अनवद्यम् अनंत पारम। सो अगर भगवान का ऑल्टर बंद है, भगवान देख नहीं पा रहे हैं, भक्त लोग भी यहाँ पर नहीं है, सीसीटीवी कैमरा भी खराब है, मैं यहाँ झाड़ू लगा रहा हूँ कोई नहीं देख रहा है, टेंशन मतलब भगवान देख रहे हैं, ठीक है। लॉर्ड इज सीइंग यू, ही इज सर्वज्ञ, ही नोज दैट यू हैव डन द सर्विस। And fourth, last, fifth quality of Lord as a master, as a perfect master, is Akunta Vikunta Drishyam. Akunta Vikunta Drishyam. He is the one who is capable of rewarding you. वो आपको दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं? वैकुंठ दे सकते हैं। सो हर एक मास्टर अलग अलग लेवल पे दे सकता है, अलग अलग लेवल पे दे सकता है। कोई, अगर आप छोटी जॉब कर रहे हो छोटी कंपनी में, तो वो आपका सैलरी 5,000 रखेगा। थोड़ी सी बड़ी कंपनी मतलब 10,000 दे दिया, और थोड़ी बड़ी कंपनी तो 25,000 दे दिया। तो कोई बड़ी कंपनी का हम नाम लेते हो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, तो नाम सुनते ही आपको एक्सपेक्टेशन है कि वो बड़ा पैकेज देगा। लेकिन सोचो वो बोला है मैं गूगल में हूँ, कितना सैलरी है? 10,000 है। क्या गूगल में जॉब कर रहा है तू? सो जितना बड़ा नाम उतनी बड़ी अवार्ड, उतना बड़ा रिवॉर्ड मिलना चाहिए आपको। करेक्ट। कोई बोले आप कौन से कॉलेज में हो? बाबा साहेब इंटरनेशनल कॉलेज। भैया ये कौन सा कॉलेज है? आप कौन से कॉलेज में? आईटी कानपुर।
नाम से ही मतलब उतना बड़ा रिवॉर्ड देगा वो, उतना बड़ा पैकेज देगा आपको. So therefore Lord is the supreme. He is the one who can reward you the maximum. He can reward you the maximum. That is what is Lord. So what reward he can give? He can give you Vaikuntha, which nobody else can give. अकुंठ वैकुंठ दृश्यम. एंड वैकुंठ इन दैट आप वहां जाके वैकुंठ मिलेगा नहीं, अकुंठ इसी दुनिया में वैकुंठ मिल जाएगा आप. इफ वी आर विद द लॉर्ड, वी आर सर्विंग द लॉर्ड इन डिवोशनल सर्विस, इसी लाइफ में आप अकुंठ वैकुंठ हो जाओगे. You will be peaceful in this life. So that's why he is a perfect master. So as a perfect master, we have to become a perfect servant. Nimitta matram. A perfect master should have a perfect servant, and we have to become a perfect servant. So therefore Krishna is telling you don't have to give up your skills and talents. Bhavya sachim, bhavya savya sachim. You have a lot of expertise, Arjuna. Use it for me. So we don't have to give up anything. We have to use it everything for Krishna. Savya sachim. That is what. So Krishna is concerned with the transformation of this consciousness of that Jivere Swarup hai Krishner Nitya Das. We have to become Das. अभी हाल ही में दिसंबर में IDBHU में प्लेसमेंट्स चल रहे थे, तो हमारे एक डिवोटी ने कॉल किया, प्रभु मुझे टेंशन हो रहा है, मेरा प्लेसमेंट है. मैं कहा अच्छा. और प्रभु जी बहुत टेंशन चल रहा है कॉलेज में, हर कोई दौड़ रहा है, इधर उधर दौड़ रहा है, और जाके इंटरव्यूज के लिए इधर उधर हो रहा है, सब बहुत टेंशन में है. So then a sudden things came in our mind. We were discussing. मैं कहा देखो ये लोग भी सर्वेंट बनने के लिए दौड़ में लगे हुए हैं. ये भी सर्वेंट बनना चाहते हैं. लेकिन ये मास्टर गलत चूज कर रहे हैं. They want to become the servant of that company, boss, because it's a natural constitutional position that one has to become servant. You cannot avoid becoming a servant. So it's a whose servant we want to become, a perfect master or imperfect master. So Krishna is concerned with transformation of this consciousness, that we become a servant of Krishna. So somebody may say, क्या मैच फिक्स कर दिया कृष्णा ने? कृष्णा ने ऑलरेडी दिखा दिया अर्जुन को सब कुछ, ये तो मैच फिक्सिंग हो गई सर. प्रभु जी मैच फिक्सिंग हो गई. या मैच फिक्सिंग तो हो गई, लेकिन अलग टाइप की मैच फिक्सिंग है. तो हमारे लिए मैच फिक्सिंग क्या होता है? एक जीत रहा है, एक हार रहा है. लेकिन ये मैच फिक्सिंग क्या है? मैच फिक्सिंग जब शादियां होती है ना, शादियां, तो उसमें भी मैच बताते हैं, उसको भी मैच बोलते हैं. आज हमारे रतन प्रभु की सिस्टर की मैरिज है टेम्पल में. तो मैच मतलब रिलेशनशिप को फिक्स करना. तो यहाँ पर जो मैच फिक्सिंग है, कृष्णा का मैच फिक्सिंग है रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना अर्जुना के साथ, और हम सबके साथ, अर्जुना के मीडियम से हमारे साथ. कि निमित्त मात्रम, अरे मेरे निमित्त बन जाओ बस, बाकी सब मैं देख लूंगा. डोंट बी अफ्रेड, मां सूचा, डोंट बी फेयरफुल. सो यस, इट्स अ मैच फिक्सिंग, नॉट ऑफ कौन जीतेगा कौन हारेगा. कृष्णा के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कृष्णा के लिए वो तो बाएं हाथ का खेल है, किसको जिताना है किसको हराना है. बट कृष्णा के लिए उससे बड़ा एक मैच फिक्सिंग है, वो है हमारा रिलेशनशिप. So Lord has a perfect plan in my life. He is my perfect master. So one should have this faith that Krishna is my eternal Suhrit Sarva Bhutanam, and has a perfect plan for every living entity. Lord's plan is definitely going to prevail. It's not going to stop, whether you do it or not. Lord has unlimited servants. If we render service, then it is for our benefit. So Lord Chaitanya said, okay, this is an important point which is mentioned over here. In the verse 1.16.16 of Srimad Bhagavatam, Sarathya Parshad Sevana Sakya Dotya Virasana Anugamana Stavana Pranamam Signeshu Pandeshu Cha Signeshu Vishnu Snigdeshu Vishnu Signeshu Pandeshu. Third line I'm forgetting. Bhaktim Karoti Sam Charana. So this is a shloka from first canto, 16 chapter 16 verse, where it is told that Krishna is becoming Sarathya Parshada Sevana Sakya Dotya. He is becoming servant, he is becoming messenger, he is becoming friend, he is becoming servant, a night watchman, all for Pandavas. Why? Snigdeshu Pandashu Jagat Pranitam Cha Vishnu. This is the third line. They were Snigdeshu. They were malleable in the hands of Krishna. Prabhupada uses this word, single word. पूरे भागवतम में एक ही जगह ये वर्ड आया है, malleable. Malleable मतलब शीट्स का malleable होता है ना, कैसे भी मोड़ सकते हो. So Pandavas were the malleable servants of Krishna. Snigdeshu, they were very, very affectionate to Krishna, and because of that they were malleable to Krishna. And similarly our Srila Prabhupada, he was malleable to Krishna.
And therefore, Krishna, nachao, nachao, Prabhu, nachao se mate, kashtira putala se, nachao se mate. So for materialistic people, everything is happening by the power of material nature. So whether they want to become an instrument of Krishna or not, they are indirectly controlled by material nature. So everyone is controlled under nature, under Krishna. Nobody can say he is not under control Krishna. So there's our choice. Voluntary, we want to be controlled by Krishna, or without voluntary, without our voluntary being controlled, we are controlled by Krishna. So voluntary, if we control, we get the credit. If we voluntary come and surrender to Krishna and become his servant, we get the credit. Otherwise, material nature is already controlling us. So yes, situations are beyond our control, but how we respond is our free will. Our response should be according to Guru Sadhu Shastra. So then the question becomes that how to become the instrument of Krishna? How to follow Krishna, what Krishna is telling. Because there are many situations which will come in our life. So Prabhu was giving a very nice thing. He said, when it is clear what to follow, then do it. कुछ चीजें क्लियर है हमारी लाइफ में, ये करना है, ये लॉर्ड का इंस्ट्रक्शन है, वो क्लियर है, उसमें डाउट नहीं है. एक बार एक डिवोटी वृंदावन टेम्पल में थे और मॉर्निंग प्रोग्राम में सो रहे थे. सो प्रभात ने उनको बुलाया मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद, बोला आप क्यों नहीं आए मॉर्निंग प्रोग्राम में? तो उन्होंने बोला प्रभात मैं माया में था, मैं माया में था. सो प्रभात ने उनको बोला आप माया के साथ मॉर्निंग प्रोग्राम में आइए 4:30 पे, माया के साथ आइए. सो समथिंग इज क्लियर, व्हाट वी हैव टू डू. उसमें कोई इफ बट नहीं है. And when it is not clear, if we are sincere, Krishna will give guidance. From within, Krishna will give guidance. He is the Chet Guru inside our heart. So Krishna's mission is unstoppable. Lord Chaitanya's mission, Prithvi te acha ki nagar adi gram sarvatra prachar hui mora naam. This is sure to happen. Prabhupada did it. And now it's going to spread all around the world. So we can become an instrument, or we may not be able to become an instrument. It's up to us. But things will happen. Anyone who becomes an instrument, he will win the glory, or he will get the mercy. We would require mercy, grace. So not every plan of ours will be successful, but we have to go on. For example, Mother Ganges, although she faced so many challenges on the path, but she never stops. So everything which we do should increase our dependence on Krishna. So we may lose a certain battle in our life. Sometimes it may look like that we are losing the battle. But if we are following Krishna and his representative, will surely win the war against Maya. For devotees, success is beyond karma. So when devotees do some service, it is not according to their karma, which they are getting result. It is beyond karma because Krishna has come into picture. So therefore we require a faith in this, that if we become an instrument of Krishna, Krishna is the perfect master. He can do unlimited. So our plan may be this much, but Krishna's plan is unlimited. His intelligence is unlimited. So his plans are unlimited. So we just have to become an instrument of him. Okay, next. Verse number 34. Dronam cha bhishmam cha jayadritam cha karnam tathanyam api yodaviram maya hatam stam jahiva vivastita yuddhasvajeta siranes sapatnan. Yes, read the translation. Drona, Bhishma, Jayadratha, Karna, and the other great warriors have already been destroyed by me. Therefore, kill them and do not be disturbed. Simply fight and you will vanquish your enemies in battle. So Krishna is telling all those which are fearful. Dronam cha Bhishmam. This is clear. He was concerned about Drona and Bhishma. They are all killed. Now this is a special name Jayadath mentioned over here. Now if you see the first chapter of Bhagavad Gita, when Duryodhana is counting the power in his army, he did not count Jayadratha. So Jayadratha was not a very prominent warrior in Kurukshetra war. Even Duryodhana did not consider him as a prominent in his army. He was not Maharathi also, he was Athirathi. Very less in comparison to all others. But Krishna is mentioning his name. He is foreseeing what is going to happen. That this Jayadratha is going to play a very important role in future. This Jayadratha will cause problem. So here he is telling that even Jayadratha will be killed. Even Jayadratha will be killed. And we remember how in the fight, Abhimanyu is killed and Jayadratha stops all other Pandavas. Arjuna was busy fighting.
And then Arjuna takes the vow that I will kill Jayadratha. And then the whole army of Kauravas is there to protect the Jayadratha. But Jayadratha was killed by Arjuna. So Krishna is telling even he will be killed. So अर्जुना ने आई थिंक ये भूल गए थे अर्जुना थोड़ा सा, या तो याद होगा इसलिए प्रॉमिस लिया होगा हो सकता है कृष्ण को याद आए बोला था जयद्रथ का नाम, तो इसलिए मैं प्रॉमिस ले लेता हूँ एंड कर्णम, ऑल दिस विल बी destroyed. So Krishna is telling you don't have to worry about anything, you just have to do what I am telling. Simply fight what I am telling. So it's important for us what we are doing to advance. So yes, Krishna is doing his part. We have to do our part of following the instruction of Guru Sadhu Shastra. When we don't follow Guru, then we lose our connection to Parampara. When we try to understand, we get bewildered. And therefore, sometimes the spiritual life becomes bewildering. Because we want to lead our spiritual life by our intelligence, which is never possible. Never. So it's the biggest trick which a Maya does, that we know how to advance in bhakti. This is the greatest trick a Maya can play on our life. That we the feeling that we know how to advance in spiritual life. मुझे पता है प्रभु जी क्या करना है जिससे मैं अपनी भक्ति में आगे बढ़ूंगा. नहीं. Every moment we have to take guidance. Therefore, accept Srila Prabhupada's words as it is. So Srila Prabhupada's small puppet were very nice puppet. Every plan is made by the Supreme Personality of Godhead, but he is so kind and merciful to his devotees that he wants to give the credit to his devotees who carry out his plan according to his desire. So this is the nature of the Supreme Lord. He is not a credit-taking Lord. He is a credit-giving Lord. Life should therefore move in such a way that everyone acts in Krishna conscious and understands the Supreme Personality of Godhead through the medium of the spiritual master. So Prabhupada is mentioning over here that if you want to understand the instruction of the Supreme Lord, you have to understand it through the spiritual master. So one devotee came to Srila Prabhupada. He said, Prabhupada, yesterday you came in my dream and then you told that you can drink wine. You can drink wine. You told me that you can drink wine. Prabhupada said, no, it was not me. It was my ghost. I am telling you now in front of you that you should not do anything like that. You should follow the four negative principles. Prabhupada, but that dream, I am telling you that was my ghost, not me. So similarly, Maya also comes in the form of ghost, many ghosts. And we think, हाँ ये भी अच्छा है, भक्ति ऐसे भी हम कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं. नहीं. Through the medium of a spiritual master. The plans of the Supreme Personality Godhead are understood by his mercy. And the plans of devotees are as good as his plan. Clear cut यहाँ बोल रहे हैं. The plans of devotees are as good as his plans. So we need to have the faith on the plans of devotees. If they are planning something for our life, don't justify. तो जी इसको ऐसे कर लें क्या, उसको वैसे कर लें, वैसे कर लें. तो अभी हाल ही में एक डिवोटी से हमारी बात हो रही थी, तो वो प्रभु जी हरि कृपा प्रभु उनको कुछ गाइडेंस दे रहे थे. तो हर गाइडेंस पे अपना एक आर्ग्यूमेंट ले आ रहे थे. प्रभु जी ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो. और हरि कृपा प्रभु उनको समझाया जा रहे थे, नहीं नहीं ऐसा करो, आप ऐसा करो. तो मैं भी बगल में बैठा हुआ था, तो मुझसे रहा नहीं गया. तो मैंने उस डिवोटी को जोर से बोला, प्रभु फर्स्ट फॉलो देन इफ एंड बट. वो इफ एंड बट करते जा रहा था. प्रभु जी ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो. मैं कहा प्रभु जो बोल रहे हैं पहले उतना करो तो. बिफोर फॉलोइंग ऑल्सो यू आर टेलिंग ये हो गया वो हो गया. हैव फेथ इन हिम. First you do it what he is telling. And then he became little silent. So one should follow such plans and victorious in the struggle for existence. See, Prabhupada is mentioning over here, you will be victorious in the struggle for existence if you follow the plan of the Vaishnavas. Okay. So now from verse number 35 to 46 are the prayers of Arjuna, which is a small section, which will get covered very quickly. It's the glorification prayers. Arjuna is glorifying the Kala form of the Lord, which he is showing, and then he will request for two-handed form of Krishna. So this section will cover in the next chapter, that's Tuesday, and we'll take one more for 11th on next Monday, which will be an ending of 11th chapter, where Krishna gives the final instruction to Arjuna in this chapter after showing his two-handed form. So that is also very, very important. That we'll see in, and with that we'll end on Monday 11th, and then in next 3 sessions we'll end 12th chapter. 12th chapter is very simple. It talks about the qualities of a devotee, which you already have.
Many of you already have those qualities. So that we'll see that time. Okay, so thank you so much. Hare Krishna. Any quick questions, doubt, what is have? 2-3 minutes. Yes, Aman. तो जी मेरे को पिछले चैप्टर से प्रश्न था Hmm. उस तो जी ये स्वरूप और विभूति में डिफरेंस क्या होता है? टेक्निकली मेरे को देखना पड़ेगा अगर वो अलग हैं तो, लेकिन जैसे स्वरूप और विभूति ऑलमोस्ट सेम ही है। कृष्णा स्वरूपा, स्वरूप इन दैट फॉर्म। एक होता है स्वयं, स्वयं रूप, उसको भी स्वरूप बोलते हैं, स्वयं रूप। जो अगर आप फर्स्ट कैंटो है उसमें है, वो श्लोक होता है, इति चामशा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हाँ, तो वहां पर भी जब आचार्य कमेंट करते हैं तो वो बोलते हैं कृष्ण का स्वरूप, स्वरूप है वो 200 फॉर्म ऑफ कृष्ण है, तो वो भी एक स्वरूप है भगवान का, इटर्नल फॉर्म। और विभूति के केस में भी कभी कभी स्वरूप बोला जाता है कि इट्स अ स्वरूप ऑफ द लॉर्ड, वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द लॉर्ड। जैसे परशुराम है, परशुराम के लिए भी वो वर्ड यूज कर लेते हैं, ही इज अ शक्तावेश अवतार और स्वरूप ऑफ द लॉर्ड इन दैट फॉर्म। तो मुझे अगर टेक्निकली किसी से पूछना पड़ेगा, मोस्टली हरि कबा प्रभु से या किसी से, कि टेक्निकली अगर कोई डिफरेंस है स्वरूप और विभूति में, आई विल चेक इट आउट, पूछ लेता हूँ मैं। ओके प्रभु। तो जी एक और था कि लाइक ये जो विश्व रूप का रिप्रेजेंटेशन, लाइक कहते हैं कि जो ट्रीज हैं वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड के बॉडी हेयर्स है, पे हेयर्स हैं। yes. उसको विराट तो रूप बोलते हैं, विश्व रूप नहीं हाँ, बोलते हैं उसको, विराट रूप। ओके ओके प्रभु जी। सो तो दोनों प्रभु में जी डिफरेंस वीर क्या है? विराट रूप आपको इमेजिन करना पड़ता है, ओके प्रभु जी। विश्व रूप रेवलेशन था, भगवान ने दिखाया था उसको। सो विराट रूप क्या है? वो योगियों को बैठ के वो लॉर्ड की मेजेस्टी को देखकर लॉर्ड को अज्यूम करते हैं। कि लॉर्ड ओके की मेजेस्टी को, इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, जैसे हम बद्रीनाथ गए थे तो इतने बड़े बड़े पहाड़ देख रहे थे हम, तो वो पहाड़ों को भगवान के बोन्स को समझते हैं कि उनकी मेजेस्टी को देख के लगता है कि भगवान बहुत ग्रेट है, तो वो इमेजिन करते हैं उस विराट रूप को। लेकिन विश्व रूप कोई इमेजिनेशन नहीं है, विश्व रूप लॉर्ड का रेवलेशन था, जो उस टाइम के लिए लॉर्ड ने प्रकट, कस्टमाइज वर्जन ऑफ इनकारनेशन, उस टाइम के लिए लॉर्ड का कस्टमाइज वर्जन था उनको दिखाने के लिए, वो था विश्व रूप। क्लियर? तो एक विराट रूप है और एक विश्व रूप है। विराट रूप का एक और टर्मिनोलॉजी आता है सेकंड, एक तो ये वाला विराट रूप है जिसमें बोन से कंपेयर किया जाता है, मतलब माउंटेन्स को, ट्रीज को कंपेयर किया जाता है। एक और है जो लॉर्ड का एक्चुअल फॉर्म भी है, जो 14 प्लानिटरी सिस्टम्स का फॉर्म है वो भी है। तो ये सब इमेजिनरी फॉर्म है। और एक फॉर्म और है, उसको मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, एक बार मैं सेकंड कैंटो में फिर से रेफर करूंगा। जो लॉर्ड का फॉर्म है, एक लॉर्ड का एक फॉर्म भी है, इटर्नल फॉर्म है, वो ब्रह्मलोक में रहता है वो, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम। वो भी ऐसा ही है, विराट रूप से मिलता जुलता फॉर्म है वो। ठीक है, मैं उसको अगले टर्न में आपको बताता हूँ वो वाला। तो जी ये 21 to 40 लॉर्ड अपने ऑपुलेंसेस के बारे में बताते हैं। हम्म तो विराट फार्म में जो हम लोग देखते हैं प्रभु जी, लाइक उसमें मेंशन रहता है ट्रीज आर दी हम्म लाइक। तो करेक्ट। ये ऑपुलेंसेस में और वो विराट फॉर्म में जो मेडिटेट करते हैं, तो उसमें डिफरेंस क्या है प्रभु जी? मैंने बताया ना अभी, वो जो विराट रूप जो वो करते हैं वो एक इमेजिनेशन है, वो इमेजिनेशन ओके इस प्रभु सेंस जी। में कि आपको मेहनत करनी पड़ रही है ये देखने के लिए, इतना बड़ा माउंटेन है, मतलब इसको भगवान ने बनाया है। ओके ठीक है, तो भगवान बहुत ग्रेट हैं। हम्म। ये पेड़ हैं, ये ऐसे हैं, हेयर्स स्टैंडिंग ऑन एंड, ये भगवान के बॉडी पे हेयर्स टाइप के हैं, वो है नहीं, वो इमेजिन कर रहा है वो। लेकिन ओके लॉर्ड के ऑपुलेंसेस एक्चुअली में है। जैसे यहाँ पर हम ओके ऑपुलेंसेस मेंशन हो रहा है कि सन इज लाइक द आई ऑफ द मून, आई ऑफ द लॉर्ड, तो एक्चुअली में सन एग्जिस्ट कर रहा है, एंड इट इज हैविंग दैट ऑपुलेंस ऑफ कृष्णा ऑफ डिस्प्लेइंग लाइट। वो लॉर्ड का एक्चुअली में ऑपुलेंस है वो कोई इमेजिनेशन नहीं है। ओके जैसे प्रभु जी। अमॉन्ग द बीस्ट आई एम लायन, सो लायन सही में पावरफुल है, ही इज द बेस्ट अमॉन्ग दोस, सो इट्स एन ऑपुलेंस, वो एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रहा है ऑपुलेंस। ओके प्रभु जी, ये थोड़ा सा
इसमें बोला गया था ऑपुलेंस में कि अ, असुरों में वो प्रहलाद महाराज बताते हैं। करेक्ट। तो जी प्रहलाद महाराज तो इतने मीन्स अमेजिंग डिवोटी है। तो लाइक असुरों में तो डेमोनिक क्वालिटीज होनी चाहिए लाइक। हाँ, तो असुरों में बेस्ट, सो ही इज गिविंग अ कैटेगरी असुरा, उसमें बेस्ट कौन है? एक डिवोटी। ओके असुरा में ओके। बेस्ट है एक डिवोटी। ये प्रहलाद मेरा असुरा में बॉन्ड हुआ है, असुरा फैमिली में, लेकिन ये सबसे बेस्ट असुरा है। ऐसे असुरा मुझे और चाहिए जो बेस्ट जो डिवोटी हो। सो देयरफॉर ही इज टेलिंग दैट ऑपुलेंस ओवर देयर। तो जी एक और था, आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दीजिए अभी। जो आपने स्टोरी शेयर की दीपक काबरा प्रो की, मैं हम्म। उनसे मिला भी था तो जी मतलब अभी मेरे को थोड़ा सा मतलब लग रहा है कि हाँ भक्ति के प्रति मतलब कुछ भी किसी भी मोमेंट में हो सकता है प्रो जी। यस। तो प्रो जी अभी एक लाइक फियर जैसा आ सकता है कि अरे मेरे को अपने बॉडी के प्रति केयरफुल रहना है। और ये जैसे कि प्रभु को कोई डिजीज आ गया तो प्रभु जी कैसे मैं देखूं लाइक अभी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और अपने मींस लाइक हेल्थ को कैसे देखना चाहिए। अब हेल्थ कॉन्शियस ना हो जाऊं मैं। देखो देखो, बॉडी पे तो वैसे भी आपका ज्यादा कंट्रोल है नहीं। इसको हम्म, तो जितना आपसे मिनिमम हो सके उतना हमको हेल्थ का टेक केयर करना है। जो भी हमको कृष्ण ने बताया, युक्त आहार विहार सा युक्त चेत सकर्मशु युक्त सपन सबोध योगो भवति दुःखः, जितना हमसे एक्सपेक्टेड है उतना हमको करना चाहिए। और बाकी टाइम हमको अपने सेवा में लगना चाहिए। सो वी हैव टू बी मोर सेवा कॉन्शियस, कृष्ण कॉन्शियस देन हेल्थ कॉन्शियस। सो दैट इज अ सबसेट, हेल्थ इज अ सबसेट ऑफ आवर सेवा, कि हाँ हमारा कॉन्शियसनेस सेवा में है। हेल्थ का भी हम टेक केयर करना चाहते हैं बिकॉज वी वांट टू रेंडर मोर सर्विस फॉर अ लॉन्गर टाइम। क्योंकि उस इसको कॉन्शियस में आप रहेंगे तो भले ही आप यहाँ रहो या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहो, कोई डिफरेंस नहीं है। तो मुझे याद है जब मेरे को ये न्यूज़ पता चली 2-3 दिन पहले, तो मैं थोड़ा चैंटिंग कर रहा था उनके लिए। तो मैं यहाँ अपना आश्रम में अप डाउन करके थोड़ा चल चल के चैंटिंग कर रहा था, तो मैं बहुत दुखी था। और मैं चैंटिंग किए जा रहा था, लेकिन फिर अचानक एक थॉट मेरे को स्ट्राइक किया। मैं बोला मैं उनके लिए क्यों दुखी हूँ? हैं, वो तो मेरे से ज्यादा फॉर्चुनेट है। मैं क्यों? उनका इनिशिएशन हो गया, उनके स्पिरिचुअल मास्टर ने उनको याद किया, उनके स्पिरिचुअल मास्टर ने उनको ब्लेस किया, उनके लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड तो श्योर है। तो उनको अगर बॉडी लीव हो भी जाता है उनका, तो उनको सफर नहीं करना पड़ेगा मटेरियल वर्ल्ड में अभी, और सीधे वो भगवत धाम जाएंगे। और हमको अभी और 30-40 साल अगर रहना पड़ा तो सफर करना पड़ेगा, और टेम्पटेशन से भी कितना जूझना पड़ेगा। हैं, अभी सारे डिवोटीज उनके घर पे हैं, डेली कीर्तन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं। वो कीर्तन सुनते हुए अगर जाएंगे, सोचिए तो भगवत धाम जाएंगे। स्पिरिचुअल मास्टर की मर्जी है, डिवोटीज की मर्जी है, लॉर्ड की मर्जी है, भगवत धाम श्योर है। और अगर यहाँ रहे तो वापस सेवा स्टार्ट कर देंगे जो कर रहे थे। तो मैं बोला यार, अगर वो बॉडी लीव भी करते हैं तो वो तो सारे टेम्पटेशन से बचते हुए चले जा रहे हैं। और हम देखो अभी अभी 30 साल रुके तो कितने टेम्पटेशन आएंगे। आते जाते माया देवी के इतने अटैक हो रहे हैं, और कभी कभी फेल हो गए तो गए हम, भक्ति छोड़ देंगे। तो मैं बोला वो तो मेरे से ज्यादा फॉर्चुनेट कंडीशन में है। डिवोटीज इसको डिवोटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर प्रेइंग फॉर हिम। मैं रोजी अभी इम्पोर्टेंट पता चला कि मतलब इम्पोर्टेंस लाइक डिवोटीज से कनेक्शन रखने पे कितना वो रहता है। लाइक हम्म। अभी अगर कोई इंडिपेंडेंट रहता तो स्पिरिचुअल मास्टर का कोई मतलब चांस ही नहीं था कि कॉल आता और उनका इन्विटेशन का है। करेक्ट करेक्ट। सोच लो, वही आपके आसपास किसी डिवोटी से अगर 36 का आंकड़ा चल रहा है तो कितना डेंजरस है। यस हो सके लाइफ के एंड में वही आपके साथ हो। हैं, यस और अगर आपका 36 का आंकड़ा है तो वो आपको माया याद दिलाएगा, कृष्णा याद नहीं दिलाएगा। यस। तो अच्छा रिलेशनशिप बना के रखो सब डिवोटीज के साथ। यस ओके ओके। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। हरे हरे कृष्णा। सो विल स्टॉप हियर। थैंक यू ऑल डिवोटीज। शिला प्रभात की जय।